hello and welcome, guys. Are we introducing ourselves? Yeah, of course we are, please. Hi guys, I am Mehek. And I'm Himani Mehek. Yeah. Please tell me. अब मैं तुम्हें थोड़ा पर्सनल लेवल पे ज़्यादा जानना चाह रही हूँ, तो मैं तुम्हें तभी समझ पाऊंगी जब मैं तुम्हारा दर्द समझ पाऊंगी. ओह. और दर्द से सबसे ज़्यादा हम रिलेट कर पाते हैं ब्रेकअप्स. तो आज का हमारी बातचीत ब्रेकअप्स के बारे में होने वाली है बेसिकली. भाई भिन्न भिन्न प्रकार के लौंडे मिले जीवन में, बट प्यार जैसे शाहरुख खान बोलता नहीं है, एक ही बार होता है. प्यार Oh my नहीं, God. ये बोलने लगी थी, करी नहीं, एक सेकंड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गलत हो गया. मैं बता रही हूँ बॉलीवुड फिल्मों ने ना थोड़ा सा हाँ. चक्कर सिस्टम जो है ना, हाँ. सिस्टम वो हिला सा दिया है. अरे बट उसने खुद भी तो 2 बार ही किया ना उसमें, तो फॉरगेट इट. वो बंदे ने बोला कि एक ही बार होता है, शादी एक बार होती है, बट फिर भी 2 बार ही करी ना. Exactly. अंजलि please. इवेंचुअली तो अंजलि was the one ना savior. Yeah. But anyway, Yeah. breakup. हाँ. तो चलो तुम पहले बता दो अपना वर्स्ट ब्रेकअप से शुरू कर लेते हैं. ये वर्स्ट ज्यादा हो जाएगा. पहले तुम कुछ हमारे बिल्डअप देना चाहती हो. व्हाट इज द सॉन्ग? तुम अभी गाना गा के सुना रही थी. तुम्हारा ब्रेकअप सॉन्ग क्या है? यार बहुत गाने होते थे, मतलब उस एज पे जब ब्रेकअप, ये लड़ाई भी होती थी ना. अभी लगता है कि ये वो वाला ब्रेकअप है कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट. तूने मुझसे यार वर्स्ट थिंग वर्स्ट होता था स्कूल में. तू उससे बात क्यों कर रहा था? बड़ा हंस के बात कर रहा था तू. वो पोजेसिवनेस. तो मैं घर जाती थी, शार चलाती थी, गाने पीछे फोन पे मम्मी का फोन लिया और गाने चलाए. मैं बहुत ज्यादा सुनती थी वो गाना अजीब दास्तान. उसमें होता है मुबारक तुम्हें कि तुम. नहीं यार, आर यू सीरियस? Because see, I'll tell you why. Because my mom, her morning ritual used to be, she used to play old music and work. जैसे हमारे लंच पैक किया, पापा के लिए कुछ किया, तो she used to play music. My dada and my mum used to. My dada at one point used to listen to "Can't Help But Falling in Love." Oh, तो my English. dada was another level. या फिर वो पाकिस्तानी उर्दू गाने बहुत सुनते थे. कट्टू मम्मी ऐसे लता मंगेशकर, आर डी बर्मन वाइब चल रहा है घर पे. तो ये लाइन ना मैंने पूछा, मुबारक की तुम्हें कि तुम किसी के हुर हो गए. मैंने कहा भाई इसका जो डीप वो है ना, डेप्थ, आई एम इन फील हो लव, रही है. तो मेरे दिल को छू गई थी. तो जब भी मेरी लड़ाई होती थी भाई साहब से, आई यूज्ड टू जस्ट गो टेक शावर आफ्टर स्कूल और मुबारक की तुम्हें, और मैं से जो आंसू आ भी नहीं रहे, मैं जानबूझ के आंसू टपकवाती थी. और द फनी थिंग और ब्रेकअप्स एट दैट एज वाज, आप सेम स्कूल में हो, बिकॉज चलो स्कूल या ट्यूशन, आप एक दूसरे को देख भी रहे हो, और फिर वो दिल मिल गए वाला प्यार भी होता था. आंखों आंखों में इशारे, नखरे. सो आई थिंक I kind of enjoyed that stage. हाँ, I think it is very like बॉलीवुड childlike. की वजह से ही Yes. बहुत ज्यादा ब्रेकअप को रोमांटिसाइज करा गया है. Exactly. Although it is not that When you grow old, no, it yeah. hits you कि बॉस वो तो मजाक था. हाँ. असलियत is way Right, too different. right. Also, when you're growing old, you realize you genuinely only care for one person who you really want to Yeah. be with, take care of. जो पहले हो गया, it was probably according to me, it is something which it's an more than that, you're also experiencing things जो आप होता है ना कि love, what is love. तो आपको लगता है कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा, yes. हम है राही प्यार के, तो आप वो एक्सपीरियंस भी लेना Yeah, चाहते हो लाइफ में. yeah. सो इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस ब्यूटिफुल थिंग्स, आप एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हो, बट डू यू रियली फील फॉर द पर्सन? वो एक एज के बाद ही जेन्युइन फील. हाँ, मतलब जैसे जो स्कूल में लोगों को लग रहा था कि ओह माय गॉड मेरा ब्रेकअप हो गया एंड दिस इज द एंड And ऑफ if द you're वर्ल्ड. very lucky, you can probably, if you grow maturely and wisely, if you're lucky, you will might as well. I have my very good friends हाँ, from जिनके school, स्कूल से ही जो same school होते हैं. lovers के हाँ, साथ ही शादी किया, and correct, they're expecting a correct. child. I'm very happy for them. Yeah. But you know, it's very different. It's to each its own. Like Firstly, I want to know like what's the worst breakup that you've had? Like तो वो वाला जो जिसमें हुआ सच में दर्द, shattering हुई तुम्हारे अंदर कुछ. If you want to share. no, I mean, I'm just, you know, it takes you back, way back Yeah. actually. But yeah, it was bad. It was, you know, at that age when you're in college and still going on from school, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि maybe he's the one. You know, I want him to meet my parents. They already know, but you want to. Yeah. But then you also realize that you're not. जैसे Rockstar में वो बोलते हैं ना कि आपका समय, this is, you could be together, but this is not the right time. Don't know the right time, right? Yeah. So maybe for me and him also, it wasn't the right time. We both were kids. We both really wanted something totally different in life. At least that awareness, as he said, that वो बहुत ज़रूरी था. But हाँ, वो shattering था मेरे लिए भी, and I'm sure उसके लिए भी था. और ऐसा breakup ना हो किसी का
तो आई Sure, फील मैं तो कहना चाहूंगी सबका ब्रेकअप हो मेरा तो ओपिनियन ही बड़ा अलग है। मैं तो कहना चाहती हूँ भाई सबका ब्रेकअप हो, एक बार सबकी झंड मरनी ही चाहिए लाइफ में। हाँ ये एक्सपीरियंस हाँ ब्रेकअप भाई बहुत एक्सपीरियंस जरूरी है यार। होना आई चाहिए। वुड नेवर से कि किसी का ब्रेकअप ना हो, आई वुड ऑलवेज से सबका ब्रेकअप हो और बहुत ही गंदा वाला हो जाए। मैं तो कह रही हूँ कि मतलब बिल्कुल शैटर शैटर हो जाओ भाई इतना भी गंदा मत कुछ करा दे कि शायद इंसान तुम्हारी रिवेंज बाजी बन जाए, इतना बड़ा ब्रेकअप हो जाए तुम्हारा। हाँ ताकि इंसान जीवन में सिर्फ अच्छा ही करे ना। यू नहीं। ब्रोक अप विद मी, मेरे अंदर का एनिमल। नहीं यार, नहीं अगेन आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस कि आई एम नॉट सेइंग एनिमल, डोंट बिकम एनिमल प्लीज। भाई ब्रेकअप कोई नहीं है हमारी। I'm ब्रेकअप not क्वीन कह रही saying- है, ऐसा खतरनाक ब्रेकअप हो गया। नहीं बट यू नो नहीं यार हिमानी, मेरे को तुमने हिला दिया है फिर से। सुनो क्योंकि तो बोलते ना कि कुछ तुम्हें अगर किसी मुझे की वैल्यू करनी है, एग्जाम्पल दो और हाँ। इंसानों की तरह दो। एग्जाम्पल व्हाट डू यू Example. मीन बाय एग्जाम्पल ऐसा खतरनाक ब्रेकअप? हाँ होना तो चाहिए। देखो एक तो तुम्हारी बॉडी बन जाती है एक चीज मैं बोल जाऊंगी प्लस पॉइंट सबकी। मैंने इतने सारे लोग देखे ब्रेकअप के बाद बॉडी बनी है यार। जैसे ही प्यार मिला मैं तो फैल गई। मैं अच्छी खासी चल रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी, ब्रेकअप के बाद सारा फैल गया मेरा। तो फिर अब इसलिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं अपने पति को कभी बार बोलती हूँ तो ये नहीं कि इंसान अच्छे तरीके से बोल कि एक साथ रह के भी हम ब्रेकअप ना हो और हम बॉडी बनाए, मोटिवेट करें। नहीं हो रहा यार, साथ में नहीं आपको होता। नेगेटिव कंडीशनिंग चाहिए ही, ये जो टॉक्सिक चीजें हैं ना हिमानी। हम टफ लव वाले लोग हैं ना, हम इंडियंस टफ लव। इसको बोलते हैं रेड फ्लैग। एनीवे नो बट आई एम सेइंग माय ओके आई विल सीरियसली गाइस, सीरियस मैं बहुत सीरियस कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप इसलिए होना चाहिए। हाँ, एक अच्छा वाला ब्रेकअप इसलिए होना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक कि हमें उससे ये पता चलता है कि हम क्या क्या चीज़ें हम ले रहे थे और हम नहीं ले पाएंगे फॉर अ लॉन्गर वाइल। एंड मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, मुझे नहीं पता तुमने ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं, बट बहुत बार व्हेन पीपल गो थ्रू अ ब्रेकअप और फिर जब कुछ साल बाद दे आर विद द पर्सन हु you know they are with and they are happy, when they look back they're always like thank god it didn't work out. They're always like dude thank god it didn't work out. And also the way they change in their new relationship because of that breakup makes that relationship work a lot better. Don't you think? Like I personally think whatever I learned from my worst breakup and then right after that I met my husband, dude, I think I would have messed this up so bad if I didn't have that breakup. I would have messed this up. And he says the same thing. He says the breakup he had before me, if he didn't have that breakup, he would have messed this up really bad. Because now we both have understood कि your priorities as to what all you our want. priorities also we have understood how much can we push the other person. Right. I am not saying कि हम ही बड़े अच्छे हैं और हमारे साथ ही सब कुछ टॉर्चर हो रहा था। हम भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग होते हैं, वो हम आइडेंटिफाई नहीं करते। फिर हमें लगता है यार हमने कितनी बार होता है ऐसे लड़के होते हैं कि या मैं लड़कों का वो नहीं करना चाहती, मतलब लोग बोलेंगे कि मैंने अपनी इस वाले के साथ ये किया था एंड आई वाज रॉन्ग, आई शुडंट हैव, लाइक लेटर ऑन इन लाइफ दे विल रियलाइज आई शुड नॉट हैव ट्रीटेड दैट पर्सन लाइक दैट. टुडे आई नो आई can't do that to my current partner, Right. because I did that and she left me. That's what I said. or No, he I left think me. it's with time and with experiences in life that you cater to, and Yeah. it's very So important. it is an experience हाँ, only, but ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ऐसा ब्रेकअप होना चाहिए कि तुम तो इंसान को Guys, I'm just a very extreme and exaggerating person. Don't go on my words. Just make beautiful bodies out of breakups. Make revenge boards. Look at Khloe Kardashian. She's become so hot after breakups. सारे रेड फ्लैग एग्जांपल्स दिए जा रही है लड़की. गाइस इसकी बातें मत सुनना प्लीज. Selective hearing with her. Selective hearing. No, what I'm saying, it is the best way to become good, to become fit. It's the best तरीका. Try it out sometimes. Go on a break. नहीं बहन. Mani, what do you think is the worst way of breaking up? on a text. या फिर बताओ ही मत, घोस्ट करके चले जाओ, किसी और को डेट करने लग जाओ, या फेसबुक या कुछ पे डाल दो कि डेटिंग दिस वन न्यू पर्सन. बस हो गया ना ब्रेकअप. दिस इज द वर्स्ट वे टू ब्रेकअप. नहीं, And have you done सामने that वाले को बताया before? नहीं. अरे इतना कहाँ यार, इतना कहाँ कर पा रहे हैं. कैसा ऑनलाइन फेसबुक पे बेचारा तुम्हारा एक्स ऐसे क्या लोग करते हैं. वो देखा हिमानी इज इन अ रिलेशनशिप विद XYZ. मैं तो अभी तक आज तक अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी नहीं चेंज करा कभी फेसबुक पे. बहुत इच्छा रह गई मेरी ये पर करने तुमने की. कभी टेक्स्ट पे ऐसे ब्रेकअप किया है? नहीं, नेवर. तुमने कैसे ब्रेकअप किया है? व्हाट वाज योर वर्स्ट वे? शिट, एक्चुअली मैंने किया है ये. देखा, सच्चाई ऐसे ही निकलती है. टेक्स्ट इंटरोगेट पे नहीं किया करके. है, थ्रू अ फ्रेंड किया है. That's ऐसे even बता worse. दिया है कि प्लीज जाके कह दो कि नहीं हो पाएगा. तुम तो बहुत ही इनह्यूमन हो. यार बट उसको फेस टू फेस बोलने में नहीं हो पाया था यार, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है. नहीं हो पाया. तो वो इमोशन क्या होती है? व्हाट वाज योर इमोशन व्हेन मेरी बस फट रही थी.
उसको बोलने में। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता रही हूँ ना, देखो, फॉर टू गिव अ मॉरली करेक्ट ब्रेकअप, लाइक टू गिव अ मॉरली, मतलब सही तरीके से ब्रेकअप करने के लिए सामने वाला बंदा भी सही तरह से लेना चाहिए। देखो, अगर मुझे लग रहा है सामने वाला बंदा बितर जाएगा, नहीं बट तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे पता ना वो बंदा कैसा है, मैंने डेट किया उसे, इतना तो पता ही होगा कि बितरेगा कि नहीं बितरेगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने पति को कुछ कहोगी तो क्या करेगा, पता है ना। तो बस फिर उसको जैसा टेक्स्ट करने का, जब वो चले गए चले काम गए? से, अच्छा। मतलब काम पे गए, कहीं गए, तो टेक्स्ट कर देने का कि कह रही है सीधा बेबी ऑलरेडी डन दिस, सॉरी। हम्म Then when he comes back, it's already too much time now, forgotten. So like why would you do something ना, मतलब I think वो face to face वाला जो ब्रेकअप है उसको लेने के लिए भी सामने वाले में मेच्योरिटी होनी चाहिए। तो तुम इसमें ये सजेस्ट कर रहे हो कि तुम मैच्योर नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मैच्योर नहीं थे। थी तब। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, बट अब वो ब्रेकअप का टाइम ही निकल गया। अब क्या करना है, जब तक मैच्योरिटी आई वक्त निकल गया ब्रेकअप करने का। तो नहीं हो पाया। बट मेरे को भी ऐसे किसी ने यार फोन पे ब्रेकअप किया, चलो उस पर ऑप्शन नहीं था, वो बेचारा कहाँ बैठा था, वो आ नहीं सकता था फिजिकली, सात समुंदर वाला? हाँ, तो वो फोन पे ही कर सकता था। हाँ, तो ये कहानी जरा आप फिर हाँ, बेसिकली आई वाज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही है ना यार, वो बंदा ब्रेकअप करने तो नहीं आएगा। जब रिलेशनशिप बनाने नहीं आया तो ब्रेकअप करने आए ना, इतनी मॉरल तो किसी की है नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन। Can't सो या expect. दिस आई थिंक, बट व्हाट डू यू थिंक इज द वर्स्ट वे? what is the worst way? Yeah. Jesus Christ. What is the worst way? Well, I think the worst thing, no, I haven't done this, never. But I've seen people doing it. I've heard people doing it. Is dating his or her best Best friend. friends. Okay, I know, my God, I have That's a very controversial so worse, so answer on toxic. this. It's possible of everything in together. Like वो क्या नहीं है उसमें, आप एक दोस्त को दोस्त से अलग कर रहे हो, so you're becoming something else. और वो दोस्त भी उल्लू का पट्टा जो, I mean, he's kind of in with you. I am not agreeing on this with you though. Why? Yeah. Have you Because been I a have part of very it? different opinion on this. Okay, so let me complete first. Please do. So I feel that is the worst thing. That's the worst thing, Yes. to like date some, like Date bro code. his bro slash code, bro her code. हाँ, like to best break friends. the bro Yeah. code. But I feel I have a very different opinion. I can get very much like called out on this, but I think कि I'm not saying to, like, this is not when you're around. I'm not supporting around with you know, best friends or sister or whatever. I'm not saying that, but I'm saying there is a very high possibility that sometimes you pick the wrong person and now the right person is right in front of you, but the only hurdle is कि वो उस बंदी जिसको तुम डेट कर रहे हो उसकी फ्रेंड या कुछ है, basically related है somehow उससे। तो do you think you will give up on the How do you know he or she is the right person? Yeah, because you've chilled with them ना, मतलब so you figured that relation with them and you are pretty much sure that this is your soulmate, like soulmate वाला scene connection चल रहा है तुम्हारा उसके Do you साथ। believe in soulmate? Yeah, I do. I believe Okay, in define soulmates. And I also believe there are multiple soulmates. I'm not saying there's just one soulmate for you, there are multiple soulmates. There is a chance कि जिसको तुम soulmate आज समझ रही हो, हाँ। हो सकता है कोई और soulmate आ जाए, फिर तुम बोलोगे भाई तुम भी जाओ तुम हो नहीं, मेरे यहाँ soulmate। पे चीटिंग को नहीं कर रहे ना हम जस्टिफाई। मैं वही। ये जस्टिफाई कर रही हूँ कि अगर like this is, you watch Friends ना, Yeah. this is like when Joey भाई says सबसे f***ed up था उनका relationship. No, but when Joey, no, this one situation, only this one situation where Joey says he has really fallen in love with Rachel. And then they tell Ross, and Ross at first is like, no, he is like very naked, nahi hai. That's what, huh? And then uske baad he is like, he realizes that he actually feels for him and he is not fucking around. And then he's like, yes, I let you do this. उसका उनके बाद वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट डिडंट वर्क आउट, बट ही सेड यस इट्स ओके, यू कैन गो अहेड विद दिस, आई विल नॉट। But do you really think in reality that's a very fictional show? In fact, I've heard and read their articles and heard them in their interviews where they've said कि if we were in a real life situation with something like this, Ross said it would have been so tough for me, I wouldn't have spoken to either of them ever, wouldn't have stayed friends with I them. can leave So that, I can leave that equation, but I will not say that you can't be, like, this is my personal opinion. If I am of dating course. somebody Yeah. and that guy tells me that he has fallen in love, I'm not saying around, I'm saying in love Right. with Platonic. my best friend or whoever, like somebody
who's related to me, Right. then I will really, if like he really feels that this is the connection he should be, then I will firstly not want to keep him, and secondly I will not want to stop him or her from finding a potential That's the soulmate or real the love. that you have for the other person then. Like I will just be like, ठीक है, I might not be comfortable sitting in between them. I'm not saying मैं बड़ी हाँ आ जाओ हमारे घर आओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ. Double date. मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं वो ना करूँ, शायद थोड़े टाइम के लिए मैं स्पेस चाहूँ उन दोनों से, और शायद मैं बाद में ठीक हो जाऊँ, या शायद वो रिलेशनशिप कभी ठीक ना हो. True. But I'm just saying, for me, I will never have a grudge or I will never judge them for doing this. I will not bring that bro code in between. Sweet. That's what I'm saying. Very sweet. So, but everybody I has their respect opinion. your opinion. Thanks. ये बताओ आप कि what is the worst advice जो आपको मिली है after having a breakup, like going through a breakup? What is the worst advice जो लोगों ने वो दिया है? फिल्म नहीं आई थी दीपिका पादुकोण की कॉकटेल हाँ. vibe become that vibe full power. My friends are like go rage and go as crazy and Jugni. Become go Jugni. crazy. I was like define your crazy. So that was the example given to me. Go become. मैं कहा वो बंदी भाई वो गलत बंदी है. पहले तो लंदन में रही थी अकेले. मैं कहा तू अमीर बहुत और अमीर. ठीक है वही. और मैं कहा looks देखो जीजी मतलब हाँ. everything she has. And anyway, but the idea was to go rage as much as you can, and despite of so how my breakup story was, I cheated. Oh my good lord. Okay, and it took me. Yeah, I cheated, and So there were you called it reasons. off? I called it off. Okay, so then. I broke up. Okay, you broke up. Yes. Eventually it became mutual, respecting everything. But yeah, जो गलतियाँ करी हैं, that was all started by me. तो मैं सोचूं कि मैंने जो चीज़ गलत करी है, why do I go celebrate it? You know, my friends are like, you did it very good, मतलब very nice and all of that. All my friends were not crazy, and I was in college back then. So I realized by third year that boss मुझे बहुत गलत advice मिली थी. I would just never do this. Go crazy in drinking or go. Because they want to numb the feeling. Basically, And the I point was is like, to numb okay, the feeling. as a human being, and at that time I was very actively also doing theater and taking a lot of workshops. So I'm like, how can I not live with my emotions and that experience of what I did? उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए मैं ये चीज़ क्यों करूँ? You know, I want to experience it. I want to actually tell my body that you know, you did wrong to a human being. I knew that love का तो छोड़ो, सब कुछ अलग चीज़ थी, but I wronged the person. It was my bad. So I need to experience the pain that I've given to myself, and I then never went back to that whole phase. I mean, I loved it when I was at it, but will I advise this to someone coming up to me and asking me I need a move on advice? I will never say that to anyone. I'd rather say experience it, अच्छे से experience करो and move on gracefully. I'd rather say that. Nice. And also I feel like another thing that a lot of people do is that they don't heal. They just keep moving from one breakup to another, yes. to another, to another, to another, Yeah. to another. Like how they say, if They you don't want to give get time. over somebody, get Yeah. under somebody else. That's like Absolutely. bullshit. Yeah. You should not. Yeah. Like you have to heal. You have, like you said, you want to feel that pain. You want to heal from that, Yeah. and only then move to the next person. Yeah. So I think that's the worst way to react कि after. भूल जाओ. हाँ कि आपने उसे भूल- फील ही नहीं feel ही करो, मत करो. उसे कहीं पीछे Exactly, डालो and हाँ. let's move on and move to the That next only person. affects you when you are with another person. Yes, and that will only ruin the next one because you've Exactly. not healed Yeah. properly. So it will ruin the Absolutely. next one. Oh, yeah. So yeah, because of Bollywood, Yeah. bhai, I realized how I only wanted to date a bad guy and make him a good guy because that would give me Fixation, it will yeah. give me validation that भाई इस बंदे को मैंने बदल दिया, मेरे प्यार ने बदल दिया. उस एजेंडा के लिए आई एम ओनली गोइंग आफ्टर बैड बॉयज ओनली, कि मुझे पता है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, बट आई एम चेजिंग हिम बिकॉज आई वॉन्ट टू फिक्स हिम. एंड आई रियलाइज कि भाई दिस इज योर प्रॉब्लम, like you are have to at fix fault. it. You Yeah. are attracting the wrong Call guys. the therapist. Stop trying to fix people. Stop becoming the therapist actually. Yeah, Like I'm trying to become a therapist. You are not. So you are not going to fix it. So I think this breakup, I Taught was you.
I really stopped and I was like, भाई what am I doing wrong यार, मतलब how am I doing this? तो यही है, मतलब मैंने कुछ ऐसा फालतू किया नहीं है सच इतना ना, मतलब मेरे को वो टाइम नहीं मिला फालतू करने का. बड़ा लंबा गैप हो गया मेरे फर्स्ट और लास्ट वाले ब्रेकअप में. ऐसे ही होता है. I think that's how it is. Yeah, like I stayed single for so long. Same. Like my entire college life. Yeah. And a lot of years after that also, I stayed single for a very long time. I Same, did not have a relationship. I had like flings happening here or there. Love. Yeah, loves happening, like that butterfly shit happening. But then भाई मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था. I used to feel nothing at all. I'm like, no, I don't want it. Like वो phase आ गया था. I'm very happy. I'm Alone. experiencing my shit. Yeah. I also took like couple of hikes. कसौल चले गए, तोश चले गए, यहाँ वहाँ, मतलब उस टाइम पे 2012 की बात कर रही हूँ. So that thing also was very new to travel solo. So it took me some himmat to just pack my bags, lie to my parents की. या थोड़े टाइम के लिए मतलब रुक जाते हैं, थम जाते हैं. थम जाते हैं. I think I did that also for a very long time. I think it was very important. Yeah, I think that is it is very important. So that is why we figured our own shit. I realize, see, चीजें आपको retrospection में ही समझ में आती हैं, because you realize कि oh, I was all this way, I was blaming the other person, but while it's my own I'm fault. the toxic one equally. Yes. I am चलती फिरती red flag. Yes, यार. correct. And that's when correct. I started figuring out my shit. Okay, now this is, मैं हमेशा इस चीज से डरती थी, मैं वो खुद कर रही हूँ. Let me figure this out. Correct. Next step would be just that. Yeah, correct. So yeah, it just helped me. That's true. So we are starting with something new, Yes, it's called the deal breakers. like mono deal. Yes. So I'm going to give yaar again. Continuity. Do not sponsor. There's no sponsor. No, but it's a game, no? Mono deal. Yeah. Have you played that No, game? I don't play games. Sorry. You don't know board games? Oh, it's You a only board play game? hard game? Oh, अच्छा, it's a board game. Yeah, it's a board game. Oh, मुझे लगा कि वो है वो जो- Monopoly नहीं है, जैसे एक Monopoly हाँ, है, हाँ, वैसे हाँ. ही एक mono deal भी है, card game. अच्छा, ओ मुझे game. मोनोपोली भी नहीं खेलनी आती, पर चलो कोई बात नहीं. हम ये भी खेलेंगे डील ब्रेकर्स, ठीक है? तुम शौक से बाहर आओ. हम डील ब्रेकर्स खेलने वाले हैं. इसमें मैं तुम्हें 2 सिचुएशन दूंगी इक्वली फक्ड अप. तुम्हें पिक करना है कि तुम कौन सा फक्ड अप सिचुएशन में किसके साथ जाना चाहोगी. बहुत ही ठीक है? toxic हो यार तुम. So I'm going to give चलती you फिरती toxic औरत. situations and you have to pick one and tell me why. Okay? Jeez, okay. Get. Okay. So, bad odor or bad dressing sense? I'll pick bad dressing sense, because can't stand bad odor. Can't. Good one. Good answer. I can't. Jeez. Okay. Now this one is tricky. पहला वाला बड़ा आसान था. Okay. Continue relationship with someone who cheated on you or with someone you cheated on. What would you do? खैरा तो बहुत ही मतलब है. I'll continue. Continue. I'm okay. I don't know. This is I swear I don't know which one to. क्या Sorry, करना है? can't pick. Karan Johar के Coffee with Karan में they don't want to answer. अब हम पे नहीं है ना कॉफी यहाँ पे तुम्हें शॉट देने के लिए. Short नहीं है. I think I could repeat करियो. हाँ कि the person who cheated on you or you will continue a relationship with the person you cheated on. With I cheated on. ठीक है फिर. Being friends with your ex or your ex's current. None. अबे तो चुनना पड़ेगा. ये कह रहे चुनना पड़ेगा भाई. कुछ तो करना पड़ेगा. हम चाहते My हैं. ex is current. Your ex's current you I can be would. friends. I can be friends with. Yeah. So these are the questions. Yeah, okay. So second one was a bit tricky. The second one was the trickiest. हाँ. Yes, it was. Correct. तो ये same सवाल है जो मैंने भी देने आंसर. तो I would say again, I would also say bad dressing sense, क्योंकि odor तो नहीं होगा. नहाओ दिन में 2 बार अगर odor issues हो रहे हैं. दूसरा continue relationship with someone. I think I continue a relationship with someone who cheated on me or someone who You I cheated on. Yeah, it's quite tricky. हाँ. When you cheat on somebody, then because you were unhappy, that's why you probably cheated on him, right? Or there could be other reasons, or Yeah, you're there's just so an many asshole, reasons. Yeah. or you're an asshole. And if somebody cheated on you, then I feel like forever you will always live in this insecurity that they will cheat on you again. So both of them are fucked up. But that's okay. है ना? नहीं लगता. नहीं. मतलब I'm मतलब जब I अगर respect your if opinion. somebody cheats on you, मैं कह रही हूँ कि चाहे वो बाय चांस ही गलती से या जो भी उसकी, मैं कह रही हूँ उसमें वैलिड रीजन है, बट अब मैं forever इस डर में रहूंगी ना कि शायद ही दोबारा कर सकता Of course, है. fair. और and also मुझे लगेगा कि मुझ But में तुम भी कुछ तो डर कम में था. रह सकती हो ना कि तुम फिर से भी कर सकती हो cheat. हाँ मैं वही कह रही हूँ. That's why it's very tricky. Also अगर मैंने चीट किया तो मैं कुछ तो अनहैप्पी थी ना उस सिचुएशन से, तभी तो चीट करा. Yeah. या तो मैं एसहोल हूँ, फिर तो मैं एसहोल हूँ, तो फिर मैं उस बंदे का रह लूंगी. तो मैं चुनना चाहूंगी, मैं उस बंदे का रह लूंगी. So चीट करने के बावजूद भी. you are the one who हाय cheated. राम, so bad. Sorry God. Sorry God.
मतलब मैं Happily married, but and not cheating for now. हे भगवान. And being friends with your ex or your ex, मैं दोनों से योग्य हूँ यार. फ्रेंड को एक्स को भी बना लो. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम बाद बस, मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दोनों से space योग्य देना हूँ, बस थोड़ा सा पड़ेगा. स्पेस हाँ, दे दो. मतलब exactly. तुरंत नहीं कर हाँ, पाऊंगी. वो तो possible, not human. हाँ, मैं तुरंत नहीं वो कि अभी फिल्मों में हो जाता है possible, यहाँ रियलिटी में कि नहीं कल है. मैं यहाँ बैठी थी, अब मैं यहाँ बैठी हूँ और वहाँ कोई और. तो हाँ, मेरे साथ सोचो तुम्हारी No. एक्स की करंट यहाँ मेरे साथ बैठ के तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करे कल ही. मेरे एक्स की करंट. हाँ आ जाओ कोई बात. आ जाओ, अब तो मैं शादी हो गई तो नहीं, पहले so after a time, after a while I'm okay with both situations. बट एक को चूज करो. With ex's friend, because more girlfriends better. Yeah, And I will tell her also how Reality fucked up he check. is. That's the thing. Reality check. कलेश मचवा दूंगी. कलेशी आंटी. So, हिमानी, मैं हमेशा से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने 20 साल वाली हिमानी को क्या एडवाइस दोगे? हाय राम, बेचारी सिंगल, बट फिर भी मैं देती हूँ एडवाइस. तो उसे क्या एडवाइस दोगे? आई थिंक 20, हाँ मतलब आई थिंक 18 टाइप्स में करी थी मैं डेट, बट हाँ 20 में तो मैं सिंगल थी. बट स्टिल इफ आई हैड टू 18-20 that age. 18 ईयर ओल्ड वाली जो मेरा फर्स्ट ब्रेकअप था, इफ आई वुड हैव टू गिव हर एन एडवाइस, आई वुड से डोंट स्टार्ट हेटिंग all men right after this. And there is somebody out there who's also not like, just because this one thing didn't work out, it does not mean that there is nobody out there for you. So because at that point, that's how I started feeling. Like I started feeling that's it. कि नहीं है, मतलब all men are going to be like this. And like I just started somewhere hating them, or at least like refraining from them. And I was like, bhai, ye nahi ho raha, it's not for me, and it's not going to work out again ever. So it's not true. You will find somebody and it is going to work out for you. Yeah. So do not worry and do not start hating men. That's true. Very well. And what would you do? I'd advise 20-year-old Mehek that be okay with the insecurities that you have. It's not a big deal to feel bad about yourself because इस age में you're still exploring, right? So my advice to her would be just be happy and not just be insecure and possessive about yourself and the other person, but trust. At the end of the day, it's the trust that is really important in any relationship. So I'd advise her to be more trusting and be more communicative. Nice. Yeah. Because I think that's the essentials of any relationship. Correct. So अगर ये missing है तो आप 20 साल के, आप 40 साल के भी हो जाओ, no relationship will give you the happiness that you're looking. So also I think happiness, वो जो खुशी आप लोगों में ढूंढते हो, you have to also first find in yourself. Yes, correct. And the trust yourself, be okay with yourself. I would definitely tell that 20-year-old Mehek. Yeah. Nice. ठीक है, तो Mehek, any last words? I'm gonna live after this. For this what video. do you mean by last for words? this video. बहन जिंदा हूँ मैं अभी. Any last words for this video? अरे यार तुम serious हो? इतने तहजीब से बोल रही हो Mehek. Any last words? बहन जिंदा हूँ. अभी हम जिंदा हैं. To conclude this. I'm gonna conclude it. Guys, I'm gonna conclude this episode. Yes. I think breakups are not easy. Yes, they're not easy. Correct. But do not personally every time take them on yourself. Don't be too harsh on yourself. True. Because one life. Keep loving, because love is a beautiful feeling. True. And be happy. Yes. Be more trusting and trust yourself. And keep watching us for more advice on breakups and love and sex education too. Yes. So please keep watching us. Give us your love, trust in us, and if you have had it and you're on it like a breakup, then you better just make a body out of it. Okay, That's she's my really last obsessed words. with some revenge body. Please, guys, इसको personally DM कर देना. अरे यार Himani on Instagram. Send her your revenge boards. Please, she's all open to that. My conclusion is just this: anything good you can get out Hashtag of revenge it, boards. make revenge boards. So, guys, share, like, subscribe, comment on Idiva. All right, bye.